फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello everyone, you're watching Cricket Next. I'm Suryakumar Yadav. It's the time for final T20 match between India and West Indies. It's the series decider. Well, what are we expecting from this match? Let's hear it out from Taus Rizvi. Hi Taus, it's the series decider. It's time to actually know who's going to win this series. It's the final T20 match time. We're just moments away from the toss. But before that, quickly tell me, are you roaring for Team India? Do you think Team India will pull this off quite easily? Of course, the last two matches fantastic. I mean, the way they pulled off the last two games, and nobody was expecting. I guess very few people, in fact, some of our colleagues also were not really expecting India to bounce back after 2-0 West Indies taken the series initially. But the way we bounced back, there was certain. I mean, India has enough firepower. Yeah, I mean, the first two were maybe experiments by Rahul Dravid and Hardik Pandya, or maybe Yeah. they were just testing waters exactly how West Indies is, or maybe how T20 series is going to be played on the wickets that were being offered. I mean, it's not it's quite different from what you usually play in international cricket, where mostly there are batting wickets. Here it was pure turners as well as slow. तो अच्छा था, मतलब the way India bounced back, and they both the matches were dominated, India dominated. But Surama, Yeah. I want to ask you, यार, I mean, यहाँ पर did you expect on I mean, forget optimism, you are Hmm. an optimistic girl, I know that, but Yeah. क्रिकेटिंग सेंस में, रियल सेंस में, रियलिटी में अगर देखेंगे तो इंडिया बाउंस बैक करने लायक था, अगर आप सोचे फर्स्ट टू मैच हारने के बाद जिस तरह से हारे हम। Huh. I think I wasn't expecting much from Team India, especially after the first two losses, because जिस तरीके से हम हारे, वो एक मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बैटिंग फेलियर लगा rather than the bowling side failure. क्योंकि अगर आप बैटर्स को देखें, you have someone like Suryakumar Yadav, you expect good runs from him. आपके पास शुभमन गिल थे. शुभमन गिल ने कल के मैच के बाद बोला कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों वो 10 रन भी नहीं बना पाए पहले के फर्स्ट दो मैचेस में. इनफैक्ट तीसरे T20 में भी नहीं वो बना पाए थे. तो अगर आप स्टार्ट देखें, स्टार्ट भी डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि आपके पास जिस तरह से शुभमन गिल जल्दी आउट हो रहे थे, जब आपको स्टार्ट अच्छी नहीं मिलती है T20 में, देन यू रिलाई अ लॉट ऑन 4 and 5 नंबर बैटर्स. और फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे फिर वही प्रॉब्लम आ रहा था. आपके पास अभी भी बड़ा क्वेश्चन मार्क है उधर कि 4 नंबर पर कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, कैसे खेल रहा है. लेकिन आप अगर लास्ट के दो मैचेस देखिए जो टीम इंडिया जीती है, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द ओपनर्स बिकॉज दे परफॉर्म्ड वेरी वेल. स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन यशस्वी जायसवाल, द वे ही परफॉर्म्ड. एंड अगेन आई एम सेइंग, अगर आपको T20 मैच में एक स्टार्ट अच्छी मिलती है, पावर प्लेज में अच्छा स्टार्ट मिल जाता है बैटिंग में, तो आपको ईजी रहता है कि आप आगे मैच में स्कोर अच्छा कर सके, और अगर आप चेज कर रहे हैं तो आप चेज भी इजीली कर सके. So that was the plus point in the last two matches, and that's why India won those two matches. But if we talk about the first two matches, I was really not expecting that India will be bouncing back in this series, because we weren't getting in a good starts. We weren't getting, those runs from our T20 specialists, so to say, Suryakumar Yadav or be it Hardik Pandya. And then bowling front, I think bowling was pretty okay for me. I didn't see many problems there on the bowling front. But don't you think so, Taus? Because we've started this conversation now on the batting front. Don't you think Yashasvi added more balance to the team? Because I felt so in the last match. No, I mean, see, Yashasvi came in place of somebody like Ishan Kishan, and Ishan Kishan himself has been in a roaring form. The way he's batting, and the way he batted in West Indies, attacking cricket he played. Yashasvi, of course, this is a pleasant headache for selectors right now. Ki they have three options. Yeah, Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill, and Shubman Gill back in form. The way he batted yesterday, very Yeah. effortless. Some strokes that came off the hips towards the deep mid wicket, over the deep mid wicket, was something exciting to watch, and some classy knocks that we saw. I've see, there were expectations. I was expecting the India to bounce back, because first two matches शुभमन himself said, आपने ही बोला कि he didn't know Hmm. exactly, और उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही या पोस्ट मैच में बोला कि क्या हो जाती है. एंड आई एम सरप्राइज कि उनको अभी तक पता नहीं था, इतनी लंबी सीरीज हो गई,
टेस्ट मैच के बाद आपके पास ओडीआईस थी, ओडीआईस के बाद यहाँ पर आपको सेकेंड लास्ट मैच में पता चल रहा है कि मेरी गलतियां क्या हो रही है। यहाँ पर उनकी गलतियां, सिली मिस्टेक्स कर रहे थे वो, और कुछ नहीं। ही वाज बैटिंग वेल, ही वाज मिडलिंग द बॉल वेल, ही वाज जस्ट डूइंग सिली मिस्टेक्स, जो उनके बल्ले से कभी शॉट्स इधर जा रहे थे, कभी बॉल हवा में चली जा रही थी। तो आपको जितना इनफैक्ट द वे टाइम आपको टुडे आल्सो आप इतना अच्छा खेल रहे थे, आपके साथ जो बैटर है जायसवाल वो भी बहुत अच्छा खेल रहे, तो वहां बनता था कि आप सिंगल हैंडेडली मैच जिता कर जाए, आप क्योंकि जीत ही रहे थे, बट देन यू वेंट फॉर दैट शॉट एंड यू गॉट आउट। सो मुझे मुझे वो मुझे एक चीज लगता है, सुनो मैं, मुझे एक चीज लगता है कि देखिए, जब ईशान किशन बैट करते हैं ना, तो ईशान किशन इज somebody who is in the flow. When he's in the flow, he goes attacking, he goes, I mean, he goes for his big shots and all. तो वहां पर शुभमन गिल थोड़ा मुझे लगता है कॉशियस या कॉन्शियस हो जाते हैं यहाँ पर। मगर अगर आप यशस्वी जैसे देखें तो दोनों एक लेवल पे, वो ज्यादा अटैकिंग नहीं है, वो अपने बैलेंस, वो मेरिट पे खेलते हैं गेंद बॉल को। ईशान एकदम ऑपोजिट है, वो हर बॉल को फेंक देते हैं यहाँ से उधर, मिड विकेट पे या बैकफुट पे खेल के पंच स्क्वायर लेग के ऊपर। तो मुझे लगता है जरा साइकोलॉजिकल ये हो जाता होगा डिसएडवांटेज यहाँ पर शुभमन गिल को, कि भाई ही इज अटैकिंग, तो व्हाई शुडंट आई गो फॉर माय शॉट्स। तो यहाँ पर या यशस्वी को लाके एक बैलेंस, मेंटल बैलेंस आ गया कि दोनों इक्वल इस पे हैं, तो अपनी गेम खेल के स्लो स्टार्ट लेकर एक बड़ा शॉट्स खेल सकते हैं। right, absolutely. But here, let's welcome Chetan Narula as well. Chetan, you have joined this live session, and with you, I will begin about the India's playing 11, because India have won the toss and they have opted to bat first. It's the same playing 11, and Hardik is saying that okay, we wanted to challenge ourselves, so that's why we had chose to bat first. What's your take on this decision? I'm not sure if this is the same pitch. मैं वही check करने की कोशिश कर रहा हूँ. If this is the same pitch as yesterday, because the square was quite big. Square काफी बड़ा था, तो उसपे काफी सारी pitches थी. So if it's the same pitch, then obviously it makes sense, because कल के 40 ओवर हो चुके हैं. आज भी, batting first is always better on such pitches or on such squares, if you can say so. लेकिन it's a series decider. I think they're going out of their comfort zone. And yeah, I mean, if the pitch is a bit on the slower side, so we'll have to wait and watch how it goes. And it's a kind of a challenge. I don't really mind it, but in the final match of the series, I think it would have been important to chase, to be in your comfort zone. But if they feel the conditions are much easier, But I think if we lose the match, then Hardik Pandya will easily say that, okay, we want to be unique. So we tried unique things and we wanted to And we challenge wanted to challenge ourselves. ourselves. Yeah, absolutely. Yeah, we wanted to challenge ourselves. I think it's now very clear and it's pretty evident what Hardik Pandya will say before the match and after the match, because it's almost the same every time. He says this only, that we want to challenge ourselves, and he always says that we want to be But unique. We want what to be unique. No, but if you look at that, I mean, if you look at the positive side of this, whatever Hardik says, so Hardik is quite an optimistic guy. I mean, even if the decision is going against him, he takes it either whether it's for the media to consume it, or whether it's like it's Hardik's intention just to show that, yeah, these are just my taunts directed at Rahul Dravid or maybe selectors, whatever I had. It is what it is. But the way he presents, I think, which is quite cool for I mean, Gen Z या Gen X. Exactly, that's how it should be prevented. ना कि वहां पर ही रोने धोने लगे कि भाई हम ऐसा है करते हैं, फिर आप केएल राहुल पे आ जाएंगे कि भाई मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है. So every That's individual has his own style, it. which is quite, I think, positive of Hardik Pandya to come out with these cool statements. And he has always been like that typical West Indian guys, and he's, I think, currently enjoying. And यहाँ पर वेस्ट इंडीज को हराने का देखेंगे वो आज भी जिस तरह से बाउंस बैक किया है. तो Chetan, straight to the most important question. Are you looking forward to a win in this match? Are we going to win this series with this playing 11? It's tough to say. I mean, who knows? I mean, just depends कि आप किस तरीके का स्कोर खड़ा करते हो. I still feel कि you need at least 160 minimum, without seeing the pitch, without seeing कि उस पे कैसा बाउंस है या क्या है. 160 आपको चाहिए, जो सीरीज का ट्रेंड रहा है. Anything more than that would be a bit of a bonus, but it just depends कि how your batting functions. Yesterday was an exceptional batting day for India. Will it be the same today? We don't know. If we don't get the same kind of start, what happens then? So it just remains to be seen. I think
depending on the pitch, if it's a slow two-paced pitch, then West Indies के लिए मुश्किल होगा. 160 odd will be tough. So it's just a matter of what kind of score you can put up. I think अगर ये first innings खत्म हो गई होती, then I would have been able to give you a better answer. But What do you think? The ideal score? 160s, 170s, 160, 170s. और यहाँ पर अगर if they put up a good 160 plus total, I mean 150 is quite chaseable, considering it's West Indies or whatever the wicket is. But अगर 160, 165 के ऊपर चले गए ना तो it's quite difficult because we have good spinners over here who can fool West Indies, Fox, West Indian batsmen who don't know how to play spin. फास्ट बॉलर्स को मार सकते हैं मगर स्पिनर्स को हमारे थोड़ा ये करेंगे क्योंकि यहाँ पर विकेट इज ऑब्वियसली चेतन सेड एंड आल्सो व्हाट वी सॉ यस्टरडे दैट इट्स क्वाइट स्लो एंड इट्स टर्निंग क्वाइट वेल. तो दीज टू हमारे स्पिनर्स दे विल डेफिनेटली एंजॉय. बट मुझे ये रहेगा कि यार अक्षर पटेल ही ओपन द बॉलिंग यस्टरडे बट ही वाजंट क्वाइट इम्प्रेसिव. सो आज वो कैसे करेंगे. एंड आल्सो आई मीन आई वांट टू आस्क चेतन हाउ इम्प्रेसिव एंड सूर्यकुमार यू एज वेल. How impressive was Mukesh Kumar? I mean, कल उन्होंने उनको थर्ड या फोर्थ चेंज में लेके आए, but then his series has been as a debutant, his series has been quite okay. What impressive? Did you find anything extraordinary in him? He's playing in this game as well. Look, individual performances पे I don't know if I can comment in that particular sense as to मतलब आप किस parameter. Did you find anything extraordinary? Did you find something extraordinary out of him, pace or something that impressed you the most? Because I found him to be very okay. No, because he's been doing the same thing that he's been doing throughout this tour. I mean, there's nothing. मैंने पहले भी ये कहा है कि there is nothing exceptional कि आपने एक मुकेश कुमार ढूंढा है जो कि he's an exceptional fast bowler. जैसे मोहम्मद सिराज जब आए थे तो you knew कि okay, you know what, it is a potential long-term Shami replacement that you have found. मुकेश कुमार bowling at 130 और कभी बॉल स्विंग होता है कभी नहीं होता है. मेरे ख्याल से उनको खुद भी नहीं पता है कि कब होगा कब नहीं होगा. रिवर्स नहीं देखा है मैंने. कुछ वेरिएशंस एज सच मैंने नहीं देखे हैं. मतलब ठीक है, मे बी ही इज लोअरिंग हिज स्पीड समटाइम्स. वो जो नॉर्मल वेरिएशन जो आपकी आ जाती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैवंट सीन एनीथिंग. मैं नहीं कह रहा कि ही हैजंट परफॉर्म्ड वेल. आई एम जस्ट सेइंग कि आई हैवंट सीन एनीथिंग स्पेक्टेकुलर कि भैया ही वॉक्स इनटू इंडियाज प्लेइंग 11 इररिस्पेक्टिव ऑफ द फॉर्मेट. वो चीज नहीं देखी है मैंने. So no, he's played all the formats I guess. ODIs नहीं खेला, टेस्ट क्रिकेट तो खेला ही है. He made his debut in this. I don't know. जाना पड़ेगा ना. अगर ये 13 लोग भी नहीं जाते तो हम लोगों को भी डेब्यू मिल जाता. तो I don't know. I mean, I don't wanna. I'm not trying to be condescending. I mean, he has a good Ranji record, but look, his pace at 130, you know, he's going to get clobbered by Australia, England, Pakistan. Even if he was like a Bhuvneshwar Kumar where he could swing the ball like banana, he's not. Maybe absolutely he's not. He's not able to. I mean, I didn't find anything extraordinary because see he's played 5. This is his fifth. Yeah. Test matches maybe, or test matches maybe, ODIs maybe, T20s maybe. There were moments where he got. आप कह सकते हो कि 12 में से एक बॉल वैसे मूव कर रहा है. ओडीआईज में मुझे खासकर याद है द न्यू बॉल एंड स्पेशली यू नो ही वाज गेटिंग सम बिट ऑफ मूवमेंट. बट वो डिपेंड करता है ना कि आप किस कंडीशंस में खेल रहे हो, किस तरीके की गेंदबाजी हो रही है, किस तरीके की पिच है. टेस्ट मैच में आई डिडंट सी हिम बोल दैट मच विद द न्यू बॉल क्योंकि आपके पास अश्विन जडेजा थे सेकंड इनिंग्स में. तो सो देयर वर इंस्टेंसेस वेयर ही वाज गेटिंग दैट बिट ऑफ स्विंग. बट क्या आप इंस्टेंसेस के नाम पे कैन ही बिकम योर सॉलिड प्लेइंग 11? आप इस टूर को ऐसे देखो, सभी ने इस टूर को ऐसे बिहेव किया जैसे सौतेला टूर होता है ना कोई, तो वैसा टूर है ये. ठीक है, तो लाइक आई सेड, शमी है नहीं, सिराज है नहीं, उनाटकट को नहीं खिला रहे, बुमराह नहीं है, किसी ने तो खेलना है ना. सो मुकेश कुमार विल रिमेंबर वेस्ट इंडीज फॉर हिज लाइफ. उनके बच्चे पोते पोतियां सब पता चलेगा कि उन्होंने वेस्ट इंडीज तीन हफ्ते में तीन हफ्ते स्पेशल फॉर हिम ना. इट्स बीन स्पेशल. अभी तो मैं कह रहा हूं कि हिज ग्रैंडचिल्ड्रन विल कम टू नो कि उन्होंने 3 हफ्ते में 3 डेब्यू किए. 3 डेब्यू करे या. But is there some sort of longevity? In my personal opinion, if you ask, can you see some sort of longevity in his international career? I doubt it. क्योंकि
we don't know about Bumrah, we don't know about Shami. Pace department में हमारे पास है नहीं कुछ. Maybe that will be a factor that will allow him to play a few more matches. I don't know. Do I see him in the ODI World Cup squad? No. Do I see him in the T20 World Cup squad next year? No. तो आपकी 2 white ball series तो हो गई ना जो prominent है. So if he's not playing for that, what is he playing for? So do I see him in the test match going to South Africa? If everybody is dead or injured, maybe, but no, otherwise no. Dead or injured. Yeah, but there are many ifs and buts in front of Mukesh Kumar's name. Shubham Patil is talking about Tilak and Mukesh. Let's talk about Tilak Varma because I found him very impressive in this whole series. Apart from that match where he couldn't complete his 50 for XYZ reasons we all know about, but apart from that, his 50 in this team, huh? What reason? The whole social media debate, Chetan, the whole social media debate about Hardik Pandya and Tilak Varma. How Tilak couldn't complete his 50. So, yeah. Social media वालों के पास time नहीं है यार. मतलब और कोई काम नहीं है. काम नहीं है कोई. So, did you see the comparison? Okay, I'm great that we have, come up with this topic. Did you see the comparison? I saw one tweet. I wanted to comment on it, but then I've had some personal stuff to take care of this week, so I just avoided it, to be honest. मतलब वेले लोग हैं. See, that's the problem. Indian cricket fans have, I don't want to say this, but Indian cricket discussion, debates, they've gone to shit. They've gone to shit. आप ट्विटर पे थोड़ा सा भी देखोगे, धोनी ने ओवरसीज 100 नहीं बनाया, चोकली, धोबी, रोहित के बारे में क्या मतलब is that it? I mean, ठीक है. I remember when I was a kid, हमारे घर में भी होते थे debates over dinners and all, कि who's a better player than Sachin or Kapil or Gavaskar and all that jazz. मतलब ठीक है. But name calling नहीं होती थी इस तरीके की. Obviously social media नहीं था उस time पे, but at the end of the day, like I've said this again and again, कि it's about the betterment of Indian cricket. You may be a Rohit Sharma fan, you may be a Dhoni fan, you may be a Virat Kohli fan. How are you a Sanju Samson fan? वो मुझे नहीं समझ आता, but anyway, to each his own. But let's keep that aside. But thanks to social media, everything is under the Indian cricket. हाँ जी, बोलो क्या था उस? Each and aspect of Indian cricket is under microscope. So यहाँ पर अब वो बात अलग है कि एक्शन नहीं होता उस सब चीजों पे. No, see, that's fine. Each and every detail is under the microscope, and you can't escape anything. That has always been the case. That has always been the case with Indian cricket. It's just कि अभी I saw one tweet during the ODIs कि look at this, Virat Kohli, he's carrying drinks. It such was a great player. costliest. Such a great player, he's carrying drinks. भैया किसी को तो कैरी करना है ना. आप 15 लेके जाते हो जिसमें से आप 12 खिला रहे हो और वो 12 खिला रहे हो जो नहीं खेलने वाले थे. That's 140 करोड़ में से 140 करोड़ में से सबके ओपिनियन एक नहीं सही सकते. हाँ, तो जय शाह तो नहीं आएगा ना ड्रिंक्स कैरी करने के लिए. किसी को प्लेयर को ही कैरी करना होता है ना ड्रिंक अकॉर्डिंग टू ICC rules. So he's not making he's not making a sacrifice carrying drinks. Yeah. Or he's not doing something great carrying drinks. It's not that big a deal. But Virat Kohli fans have to do that. But that is also a good PR exercise if you look at from Virat Kohli. No, that's fine. Junior cricket. Normally, you wouldn't see. No, but I'm telling you another tweet. Another Kohli fan says कि this is a conspiracy by BCCI ये वो कि सचिन के 100 ना क्रॉस हो सके, ODIs नहीं खिला रहे. 4 साल से 100 लग नहीं रहे थे. वो conspiracy किसकी? Silence was the answer. Our silence was the answer here. 4 साल से जो सेंचुरी नहीं लग रही वो किसकी conspiracy थी? यहीं पे आके सारी सेंचुरियां लगानी है. Oh yeah. It's absolutely bonkers. I mean, what did you expect Hardik Pandya to do? Somebody said कि नहीं वो धोनी ने 1 रन नहीं लिया. एक ब्लॉक किया था. हार्दिक पांड्या को ब्लॉक करना चाहिए था. क्यों? That's what fans wanted. कि भाई एक मैच जितवाया है, तिलक वर्मा मैच जिता रहे. I thought what Dhoni did was stupid as well. I thought what Dhoni did was stupid as well. And मतलब ठीक है यार, it's about, I don't know. I mean,
तिलक वर्मा's half century didn't happen. मुझे नहीं लगता कोई कयामत आ गई. नहीं कयामत अच्छा, हमारे लिए नहीं आई है. do you think कयामत वो कि इंडिविजुअल, देखिए anything इंडिविजुअल wrong? प्लेयर के लिए भी like it would have given a certain kind of boost and it would have added on to Why? his 50 He numbers. scored 49. That's number. not giving him a boost. Absolutely, it is given, but then when it adds, when 50 एक माइनस, देखिए आप I don't एक agree with that. 50 No मिस हो chance. जाता है. देखिए No, वैसा no. it's It's not about debatable. individual. It's debatable. He could have gone and given one run No at way. least, or No, maybe no. it's International also sports okay. not It's made on. also नहीं, international sports ऐसा होता नहीं, but it's also okay for Hardik to give this youngster an opportunity to score a 100, because cricket is not just a team game, it's an individual Okay. game that is played by, it's a team game That's the that is played problem by with Indian cricket. individuals. Yeah, Nahin, that that's is the Actually, problem problem. with, That's the problem yeah, with that's Indian how we cricket play now. cricket. See, That's how we individual. play cricket. We That's the worship problem with. individuals. वही मैंने बोला. Whether it's Babar Azam in Pakistan, or whether it's like आप कोई भी ये ले लीजिए. That's Yeah, the I mean, problem. I I said wouldn't कि say, Indian cricket का discourse जो है, Indian cricket का debate, discussion, discourse जो है, it is now restricted to individual achievements. आपका प्लेयर जो फेवरेट है वो अच्छा कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो ये कब से दूसरे का नहीं आप है. मजाक देखिए उड़ाओगे, देखिए ये कब से नहीं है. This I is mean, what देखिए Indian cricket has शुरुआत been reduced to. नहीं, but cricket And has I always been like this. You absolutely have count no about time. 10,000 runs of Sunil Gavaskar और individual hundreds. यहाँ पर टीम गेम कितना लोगों ने ये किया है यार. अब सचिन के हंड्रेड्स काउंट करते हुए आ रहे हैं. आप एक के बाद वानखेड़े जाके बैठते थे, बोले सचिन का 100 हो गया, उसके बाद लोग टीवी बंद कर, तो ये अभी इट्स नॉट अ न्यू थिंग यार. टीवी बंद कर दिया, that was सचिन का 100 खत्म हो गया. या अगर आप तिलक वर्मा ने हाफ सेंचुरी नहीं लगाया उसको आप सचिन के 100 नहीं जस्ट हुआ वन ऑफ ठीक है, आप जनरल. सचिन के 100 नहीं होना था. सचिन आउट हो सचिन के गया, नहीं 100 सचिन नहीं आउट हो गया, आप चले गए, टीवी बंद कर दिए. हाउस सचिन के 100 होने पे टीवी ऑफ नहीं होते थे, सचिन के आउट होने पे टीवी आउट होने पे टीवी ऑफ होते थे. और आप देखो, आप उस एरा को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ यू हैव टू लुक एट हाउ द इंडियन टीम वाज परफॉर्मिंग. ही वाज प्रोबब्ली द ओनली वन हु वाज परफॉर्मिंग इन द इंडियन टीम. इंडियन टीम वाज नॉट विनिंग मैचेस. टुडे वी आर नो वेट अ मिनट. टुडे वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड, वी आर शॉक्ड. हमारे पिछले 3 हफ्ते से हम लोगों ने अपना सर पीट लिया है कि आप इस वेस्ट इंडीज टीम को नहीं हरा रहे. सचिन प्लेड हिज क्रिकेट व्हेन दिस वेस्ट इंडीज टीम, यार रॉन डालते थे इंडिया को यार. मैं स्कूल में था 120 रन चाहिए थे. मैं सोने गया रात को बिकॉज ऑब्वियसली सारी रात जाग, अगले दिन स्कूल होता था, मैच तो नहीं देख सकते ना सारी रात जाग के. सुबह 7 बजे उठ के ब्रश करते करते रेडियो ऑन किया तो 80 ऑल आउट. व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? देयर कैन नॉट बी एनी कंपैरिजन. उसी वेस्ट इंडीज टीम ने रेड पेल दी थी हमारी यार. सॉरी टू यूज दीस वर्ड्स. इयन बिशप जो आज कमेंट्री कर रहे हैं, ही वाज वन ऑफ दोस बॉलर्स. आई एम टॉकिंग अबाउट इयन बिशप, साथ में कर्टनी वॉल्श, कर्टनी एम्ब्रूज. आप किनके अगेंस्ट खेल रहे हो? So there's no comparison. Individual records have always been there, but I'm saying at the end of the day, उस discussion का end point क्या था? The betterment of Indian cricket. आज भी आप individual records हमेशा discuss होंगे, but where is the betterment of Indian cricket has gone? That's my point. Well, that's a part of a larger discourse. That has been lost completely. Nobody cares about the betterment of Indian cricket now. ये जितने भी विराट कोहली, रोहित शर्मा, this is my biggest grouse against them कि at the end of the day it is team India. वो चीज खत्म हो चुकी है बिल्कुल. ये सोशल मीडिया का, I can say this is the worst thing about cricket on social media. Individualism. ठीक है, आप IPL में करो ये सब, टीम्स ऑफ सीजन में करो ये सब, पर जब मैच चल रहा है, सीरीज चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है, आप रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली करने वाले हो और देखना होगा. होगा. It's because of that only, चेतन. मुझे लगता है कि it's because of IPL. किसी हद तक IPL की वजह से भी है, क्योंकि आप बहुत डिवाइड हो जाते हो. You are supporting your team. For example, 2008 से है. IPL 2008 से है. ये विराटियन वर्सेस रोहितियन का फिनोमेनन इतना ज्यादा नहीं था. अब जिस लेवल पे है, I don't know. It has been, नहीं देखो, maybe because for a long time you did not have, a lack of superstars. You had Sachin, you had Broward, you had Kumble, you had Lakshman, you had Zair Khan, you had Yuvraj, you had Dhoni, all of them together in the same team. Today we are talking about superstars. उसमें maybe we have 2 superstars, Rohit Sharma and Virat Kohli. Maybe a third superstar in Bumrah, but वो आधा टाइम तो दिखाई नहीं देते हैं, तो he's not been able to reach that height of superstardom. There is Ashwin, लेकिन उनको superstar कोई मानता नहीं है, क्योंकि सेना countries, मतलब बैठे somebody thought up of सेना countries, मतलब यार उस चक्कर में हम लोग WTC फाइनल हारे गए उस चक्कर में. but at the end of the day, चेतन, मुझे ये लगता है
somewhere the betterment of Indian cricket has been lost. हाँ, no, you are right. ताउस ने अभी थोड़ी देर पहले जो बात वो कर रहे थे कि you know now fans see everything from that microscopic lens. I think that's true because वो इतनी छोटी छोटी चीजों को भी बहुत बड़ा बनाते हैं सोशल मीडिया पर. और see, we won that match. ठीक है, हम जैसे भी जीते, we won that match. But that wasn't the trend that day. What was trending was why Hardik Pandya went for that six and he didn't let Tilak Varma complete the match and all of that thing. But चलिए ठीक है, at the end of the day, we saw how Tilak Varma performed so far in this whole series. Now, I want to know from you, Tilak Varma is just 20-year-old. Would you like to see him in the ODI team for the upcoming World Cup? Because that's also another topic that's getting discussed on the social media platforms. And quite a lot, many former cricketers have mentioned. I think I saw a tweet from Robin Uthappa today. He said that why not Tilak Varma on number 4? So, but he's just 20-year-old. So, would you think of him as a probable option in the ODI team? I think we discussed it yesterday when Chetan was there that Tilak Varma, yeah, he will get his chances. And Asia Cup, I mean, is he going for the Asian Games? Yeah. Yeah. Yeah, I mean, for now, I think he should concentrate on the Asian Games because he won't be there in the World Cup squad. So Ireland series के बाद he should But the concentrate on shift from T20 to ODIs, Taus. I'm talking about, ODIs. you know. It's a long. I mean, देखिए, right now the focus is on the ODIs. Who's the number 4? यहाँ पर since he has been picked in the Asian Games, he won't get an opportunity in the ODI World Cup. So it doesn't matter whether after the World Cup, yeah. I mean, then the focus will shift to the World T20 Championship, which is happening next year. But in the future, definitely he's a future number 4. और कितना खेल रहे ODIs वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जितना इररेलेवेंट होता जाएगा धीरे धीरे ओडीआईज अगर ये वर्ल्ड कप के बाद टेस्टिंग टाइम्स हो जाएगा ओडीआईज का उसके बाद कितना कम वैसे भी आई मीन इन दी वर्ल्ड कप ईयर हाउ मच वी प्लेड वेस्ट इंडीज वी प्लेड जस्ट 3 मैचेस फॉलोड बाय एशिया कप उसमें भी कुछ खास नहीं खेलेंगे फिर ऑस्ट्रेलिया सीरीज तो आप देखेंगे वो जो एशिया जो ओडीआईज की जो नंबर्स हैं थोड़ा क्रंच होते जाएंगे तो हाँ उनको मौका मिलेगा नंबर 4 तो अभी तक है ही नहीं हमारा कोई भी बट अभी फायदा नहीं कि वर्ल्ड कप में जब है ही नहीं ही इज नॉट देयर लाइक ही इज नॉट इवन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स डजंट मैटर या so I think he should focus on at least the ICC World T20 World Championship which is happening in West Indies and America's next year and the best part of this of next year series is Tilak Varma now knows how to play in West Indies since he has performed here he knows the kind of wickets that he is going to be offered there and he will take the whole confidence from here to maybe next year बट देन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एशियन गेम्स में जाएंगे वहां कैसे करेंगे मजा आएगा वॉन्गजू में देखने किस तरह की विकेट्स होंगे किस तरह का ग्राउंड है क्वाइट अ वियर्ड शेप ग्राउंड बट या वर्ल्ड फ्यूचर में डेफिनेटली आई मीन व्हाई नॉट यार फ्यूचर में बहुत सारे नए लड़के मिलेंगे हमको देखने के लिए विराट रोहित पे जाएंगे धीरे धीरे तो तिलक क्या और भी बहुत सारे ऋतुराज गायकवाड़ बहुत यशस्वी जैसा सबको मिलेगा मौका Absolutely, he looks very promising. He's just 20, and everybody is looking forward to how and he's quite a mature player compared to. I mean, you see, I mean, Yashasvi looks mature. Shubman Gill looks mature. This guy also number 4 or I mean, in the middle order, he's quite at the age of 20. I mean, it's quite a good year yeah, that you've got people who know how to take responsibility at difficult times. So I think we have a bright future. Only that. We have semblance. I mean, our head is on our shoulders. That is only. Well, it'll be quite exciting to see him in today's match as well because we're talking about today's match. Let's see how he scores. But Chetan, because we're just moments away from the match, I want to know from you, कौन बड़ा score करेगा? Are you putting your bet on Yashasvi Jaiswal, Shubman Gill just because they performed really well yesterday? यार ये प्रेडिक्शन वाले सवाल ना पूछा करो I mean it's really impossible to I still remember after the second match you said क्या लगता है टीम इंडिया को कि 2 मैच हारने के बाद ये 3 मैच जीत जाएंगे आप अगर आपको याद हो तो मैंने उस टाइम पे यही कहा था कि अगर आप जीतोगे तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की वजह से जीतोगे बिकॉज़ टीम इज लैकिंग दैट तो आपने कल एक बहुत बड़ी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखी है कलेक्टिव था यार बॉलर्स भी किए हमारे बंदे लास्ट 2 मैचेस में बॉलर्स भी किए लेकिन तो एक चीज आई वाज टॉकिंग अबाउट बैटिंग में आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस देखनी पड़ेंगी मैंने ये स्पेसिफिकली कहा था when we were 2-0 down and Suryakumar was hosting the show so yeah probably she remembers that
Yeah, we will need another big batting performance, especially because you're batting first. आपको 160, 170 डालना पड़ेगा, because in case the pitch turns out to be a good pitch to bat on, then रोहित इज सेइंग 200 प्लस होगा आज. इनमें काफी ज्यादा मुश्किल लग रहा है. नहीं, ऑप्टिमिज्म है. मुझे ये लगता है, बहुत देखिए मुझे लगता है चेतन को अगर बुलवाने का है कि कौन अच्छा खेल रहा है, तो उनकी फैंटेसी 11 जो है वो अगर वो बनाए होंगे उन्होंने, तो पता चल जाएगा कि भाई वो नहीं किसको, बना कौन प्लेयर्स के ऊपर ही इज होपिंग, पिनिंग हिज होप्स ऑन. नहीं नहीं बनाए. बट आई थिंक वो कभी भी बना सकते हैं फैंटेसी 11. इट्स नॉट दैट लेट, और इज इट दैट लेट? आई डोंट थिंक सो. It's still not interested. You can tell us. You can tell us. You have to Not tell interested. कौन बड़ा स्कोर करेगा. Not interested. नहीं, like I said, मैं ये नहीं कहूँगा कौन बड़ा स्कोर करेगा. T20 गेम है यार. How can you ask me कि T20 में कौन बड़ा स्कोर करेगा? It's a ridiculous thing. Like I said, I have to maintain बुरा this. हो गया है. Chetan, please stop playing around. You have to take a name. एक I'm not नाम taking लेना a name. पड़ेगा. अरे I can't take names from. मैं कैसी बातें कर रही हूँ? T20 क्रिकेट में you can't predict कि ये प्लेयर बड़ा स्कोर करेगा. कैसी बातें कर रहे हो? It's T20 cricket for a reason. Like I said, I'll just say the same thing. If India has to win the series today, same thing. Like I said, you need a big individual batting performance. जैसे आपने पिछले मैच में देखा है, उससे पिछले मैच में देखा है, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल. If you could have said Shubman Gill at the first place, I would have been the happiest one to begin this conversation with. I mean, you just had to say Shubman Gill. I mean, or you could have said any other player's name as well. मैं आपको 3 नाम गिना रहा हूँ, तो पिछले मैच में जिन्होंने बड़ा स्कोर किया है. So, like I said, you need a big batting performance from at least one player and a support performance from the other players. So, this is the same thing. We need similar thing. कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये that is really impossible to predict. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सी एज सूर्यकुमार, जैसे तुमने शुरुआत में बोला था और जैसे हम सब मानते हैं कि टॉप ऑर्डर ने अगर परफॉर्म किया, अगर स्टार्ट अच्छा दिया टॉप 3 में, तो फिर आपके चांस है कि बड़ा स्कोर बने. अगर आपके टॉप 3 फ्लॉप हो गए तो बाकी के नीचे खत्म. Exactly, I was talking about बाकी that के, I before mean, they'll Chetan fall like joined. pack of cards unless तिलक वर्मा comes and plays a responsible knock, जहां पर आपको बचाना है. अगर In fact, आपको no, ऐसा Tilak Varma is a 150 good name because 140 तक. नहीं, इनफैक्ट बिकॉज अगर आप पहले 2-3 मैचेस देखो तो वहां पे इंडिविजुअल बैटिंग परफॉर्मेंस जो आया है वो तिलक वर्मा से आया है, बट दे वर नॉट बिग बैटिंग परफॉर्मेंसेस, क्योंकि probably because he's batting at number 4, वो अपॉर्चुनिटी जा चुकी है, वो नंबर ऑफ ओवर्स निकल चुके हैं, the pressure has increased and all. I'm not going to judge him or anything, he's played fabulously, but I'm just saying कि you've had individual batting performances throughout the series, you need big ones, and we saw the big ones in the last 2 games from Sky and Jaiswal. And Jaiswal, for me, I mean, he is the future star. Undoubtedly. Yes, Shubman Gill has stolen a march, but obviously Shubman Gill बहुत ज़्यादा आगे advanced हैं. उन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल ली है. Jaiswal has just started, but I don't know, from a starting point vantage, जहाँ पे शुभमन ने स्टार्ट किया इंटरनेशनल क्रिकेट और जहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने स्टार्ट किया है, I think Yashasvi has a better all-round game than Shubman Gill. Obviously, international cricket में we only have the IPL, but let's not forget the pitches have been tough. और उन्हीं pitches पे शुभमन जो आगे निकल चुके हैं in terms of his international experience, score नहीं कर पाए the way Yashasvi has scored or adapted. Let's use the word not scored, adapted. So from a starting point, I think Yashasvi has a bit of an advantage. I would love for both of them to become, the ultimate future of Indian cricket, which is across formats. But I feel Yashasvi Jaiswal is the next big batting superstar. Absolutely, and I agree with him because I had a chat with his coach. यहाँ पर उन्होंने describe किया कि जैसा चेतन ने exactly बोला कि he's got the adaptability factor यहाँ पर, क्योंकि he's a mentally strong player. The way he came from that small village, adapted to the difficult conditions of Azad Maidan, where he lived in small tents where there was no electricity, followed by batting on those tough wickets at the Azad and the cross Maidan, the Maidans where wicket is not beautiful. Wickets are very difficult to play on, where it turns a lot. Typical West Indian kind of wickets जहाँ पर ball slow निकलता है. तो adaptability factor एक इनमें आ जाता है, मेंटल स्ट्रेंथ इनमें आ जाती है. बहुत कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है. Let me also add here कि it's very unreasonable to judge Shubman Gill on this, क्योंकि एक चीज ये भी है कि उन्होंने टेस्ट सीरीज पहले आई थी. क्या ODIs और T20s पहले आए होते जहां पे वो ओपन कर रहे हैं, क्या वो अपनी रिदम बना पाते बैटिंग की, स्कोरिंग की? वी डोंट नो दैट, क्योंकि थोड़ा गैप भी हो गया था.
and then he was batting at number 3, a totally different position, a totally different scenario. Out हो गया जायसवाल out हो Yeah, गया. Yashasvi Jaiswal has been jinxed already. Who's Yeah. jinxed play? Anyway, sorry for interruption. My Yeah. point is कि I lost my chain of thought. Yeah, like I said कि ODI और T20 अगर पहले आए होते, उनको अपना बैटिंग रिदम पहले मिल गया होता, maybe he would have scored much better in tests. But he came away straight into tests. एक महीने का gap था. They had only an intra team practice game. He was batting at number 3, a totally new position. The pitches were on the tougher side. Yeah. Too paced, slow, so it can be tough. और वो फिर एक रिदम जो है ना आपकी अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो वो चलती रहती है. ODIs में भी the first 2 pitches were not that good to bat on. So, or for that matter, the first 2 T20s, they were not really good to bat on. So, but yes, Shubman Gill likes the ball to really come onto his bat, scores freely on those surfaces. Australia was, I'm not talking about IPL or Ahmedabad, जो again social media पे जो बकवास चल रही है. Talking about Australia में जो उन्होंने किया. Even on a day 5 track, the ball comes really well on the bat. तो वहाँ पे तो he's going to have breakfast all day. So, is that a chink in his armor? Like I said, it's too early to say. But जो adaptability first series में, मैं starting point की बात कर रहा हूँ. You know? So starting point में the adaptability that Jaiswal has shown, maybe एक कदम आगे हैं from the starting point. Not today. I'm not saying he's a better batsman than Gill already. I'm talking about the day Gill started in international cricket, but it's not that big a comparison. I think they're neck and neck. 19-20 का फासला है, but I'm talking about in terms of how great Yashasvi Jaiswal looks at the crease. That's what I'm talking about. और ये jinx wings कुछ नहीं होता है. मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर मैच में 80 रन मारेंगे. That's not what I'm saying. At least ये तो count out हो गया कि कौन बड़ा स्कोर करने वाला है. यशस्वी तो नहीं करने वाला. हाँ, एक तो हो चुका, एक तो साइड हो गया, बट एक नाम नहीं जो करने वाला है इस में या पर यहाँ पर अभी सूर्य कुमार यादव आए हैं बैटिंग करने के लिए, और एक ये डिसीजन है जो मुझे नहीं समझ में आता है कि सूर्य कुमार यादव कौन सी बैटिंग पोजीशन पे बैटिंग करने आएंगे. वो आपको किसी मैच में भी कभी भी फिक्स नहीं रहता है. मैं इस बारे में सोच रहा था, बट आई थिंक लेट द सीरीज फिनिश एंड वी विल टॉक अबाउट इट. We will talk about it because I was very surprised. I was expecting Tilak Varma, to be honest. I was expecting that he'll come out to bat, but then this Kumar Yadav. Like I said, कि इसके बारे में कल बात करते हैं. Let the match pan out. Let the match. Because we have to figure out the names for the T20 World Cup based on this series. कि आप कैसे mix कर रहे हो, and also it's another conversation. और बस मैं यही कह के finish करूँगा कि ईशान किशन, शुभमन गिल और जयसवाल को आप कैसे playing 11 में fit करोगे एक ही में. That is a new headache, and that is coming soon after the World Cup. Absolutely. Let's see what happens in today's match, because एक विकेट तो जा चुका है. यशस्वी जायसवाल, हमारी लिस्ट जो हम अभी छोटी सी हमने लिस्ट रेडी करी थी कि आपको अच्छी स्टार्ट मिलनी चाहिए, उसमें से तो जायसवाल का नाम जा चुका है. But we have Shubman Gill and Suryakumar Yadav right now playing in this final T20 match. It's the 5th and the final T20 match between India and West Indies. Thank you so much, Chetan and Taus, for joining with me. Thank you so much, everyone, for joining with us in this conversation. Hello everyone, welcome to our new show Crick Sunday with me, Suramya Kaushik. कौन खेलेगा? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? Well, इन सभी सवालों के जवाब आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि Crick Sunday में होगा एक स्कूप फन, एक स्कूप मीम और एक स्कूप full of controversies. Well, Facebook, Instagram, Twitter और अब Threads भी, इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, और जितने प्लेटफॉर्म्स उतने मीम्स और कंट्रोवर्सीज भी, थोड़ी नोक-झोंक and a lot of entertainment. Join us every Sunday at 11 AM only on CricketNext.